हेयर सलोन अपना हेयर कलर कराने और अगेन अपना हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन कराने। मैं पोरबंदर में रहती हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही टैलेंटेड सलोन ओनर है जयम करके, जिनसे मैं पिछले 3-4 साल से कलरिंग वगैरह करा रही हूँ। अगर आपने मेरे मॉलदीव्स वाले ट्रैवल ब्लॉग्स फॉलो किए हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने ग्रीन कलर कराया था और हर तरीके का हाइलाइट्स वगैरह मैंने उन्हीं से कराया। उनका हैंड वर्क बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैजिकल वर्क है उनका। क्योंकि 2020 में हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, इसलिए मैंने 2020 में पूरे में ही कलर नहीं कराया। मैंने 2019 नवंबर में जब मेरे कज़न की वेडिंग थी तब मैंने कलर कराया था बालों में, और अभी मैंने बोटॉक्स कराया था, मतलब इट्स काइंड ऑफ परमानेंट हेयर स्पा। वो मैंने कराया था 5 महीने पहले। उसका पार्ट 1 मैं ऊपर सजेशन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी पोरबंदर में मैं हूँ और यहाँ से हम लोग परमानेंटली जाने वाले हैं, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ से जाते टाइम एक अच्छा सा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा उनसे करवाऊंगी। सो आई एम गोइंग फॉर दैट। ऑल्सो मैं अभी वेकेशन पे भी जाने वाली हूँ, स्टेकेशन पे भी जाने वाली हूँ, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं। क्योंकि 2020 में तो हम कहीं जा नहीं पाए थे, बट 2021 में बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है। सो आई थॉट कि एक अच्छा सा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट्स ऑलरेडी 2:15 और उन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था। सो आई एम शूटिंग दिस इंट्रो लाइक दिस, और मैं काफ़ी लेट हूँ और ऑन द वे हूँ। और आज बाय द वे लोहड़ी है, लोहड़ी वाले दिन मैं ये करा रही हूँ। सो हैप्पी लोहड़ी। आई नो जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब लोहड़ी को 4-5 दिन हो जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगती है। स्टिल आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस हेयर कलर, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके के हाइलाइट्स में करा रही हूँ। मैंने कभी भी पूरे बालों में हाइलाइट्स नहीं कराई है, हमेशा मैं जो नीचे के बाल है उनमें हाइलाइट्स कराती हूँ, या फिर एक स्ट्रैंड जो है उस पर कलर कराती हूँ। तो अभी उनका कॉल आ गया था कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम 4-5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। सो आई हैव ऑलमोस्ट रीच द डेस्टिनेशन और अभी जल्दी से हेयर कलर कराती हूँ। बाय। हेयर जैम इज़ चेकिंग माई हेयर कि इसके ऊपर कलर चढ़ेगा या नहीं, बिकॉज मैंने 2 महीने पहले ही हिना किया था, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर करना। हेयर कलर तो में नीचे कॉपर दिख रहा है, तो उसके रिलेटेड कुछ मर्ज कर देंगे ऊपर से। गोइंग फॉर फ्री हैंड पेंटिंग लाइक बायोलॉजी और समथिंग। लाइक दैट स्टार्टेड। So now I think so I will be going for this color 8.34 golden, जैसे कि कॉपर कलर जैम ने बोला है। यहाँ पर हेयर वॉश की प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए मुझे गाउन पहना रहे हैं। क्योंकि कलर करना है तो हमेशा क्लीन बालों पे ही हमें कलर करना होता है, इसलिए हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है पहले। Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Right now we are going for highlight, and हम जो highlight कर रहे हैं वो direct high lifting shade से कर रहे हैं. We are not using any kind of blonder or pre-lightener or you can say bleach or nothing. We are doing highlights directly with the color tube, and we are using L'Oreal Margaril for highlight. Today, Jayam will be using 3 techniques for highlighting my hair. For the lowermost section of my hair, he will be using back combing technique for more texture in hair, which means he'll take a strand, back comb my hair, and he will color the rest of the strand. After coloring, it is always recommended to wrap the strand with foil paper.
The foil heats your hair, which opens its cuticle to the ammonia which enters inside your hair. This will lighten your hair subsequently and also lift the hair more. For the middle section of hair, he will be using the second technique, which is freehand painting balayage technique. Here, if you are noticing, he is barely touching the brush and coloring my hair. Comparatively, the back combing technique, in this technique, he'll take thicker strands and color the hair. This will provide the depth in the hair that we need for today's highlights. And for this technique, he's not folding the coils, if you can notice. And here comes the last and the third technique, which is big weaving technique. Look how beautifully he weaved my hairs with the help of tail brush and picked up a few strands. And
वेट ना कृति, हटो यहाँ से, हटो, गो कॉल पापा, गो कॉल पापा, पापा को बुला के अपने। अरे अभी दे रही हूँ, वेट, जजे ये, जजे के लिए पापा को बुला के गो। मामा क्या? लकड़ियाँ ज्यादा नहीं है, जल्दी आ जाओ। वेट, उसमें डालो। This fire? Yes, fire. Hey, hold the fire. No, don't hold fire. How did you know? No, hand चला लो वापस। ऐसे, ओ, ऑन करके। Casa, turn watch. Don't go patchy. Where's my house? चलो वापस मिलो। साथ फिर चक्कर आ गए। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy.